हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम। आज मैं हूँ न्यू जर्सी में, जो यहाँ पे एक हॉट एयर बलून फेस्टिवल हो रहा है। यू कैन सी देयर, वहाँ से एंट्री है इसका और ये पूरा इसका पार्किंग लॉट है। ये जो हॉट एयर बलून फेस्टिवल होता है वो हर साल होता है। तो लास्ट ईयर कोविड के कारण हुआ नहीं था, सो इट इज़ आफ्टर 2019 ये 21 में हो रहा है। दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ हॉट एयर बलून जो स्काई में एक साथ उड़ते हैं और डेट लुक्स ब्यूटीफुल। आप उस हॉट एयर बलून का भी टूर ले सकते हैं, विच कॉस्ट आई थिंक 200 समथिंग। यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट एंड यू कैन सी देयर लॉट ऑफ हेलीकॉप्टर ओवर। यहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर है। आई थिंक ये पूरा एरिया एयरपोर्ट है, मे ये पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर होंगे, पुलिस के हेलीकॉप्टर जो पेट्रोल कर रहे हैं इस पूरे एरिया को। ये 3 दिन हुआ था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और संडे हम लास्ट दिन आए हैं। वी आर गोइंग इनसाइड, हम जा रहे हैं अंदर। वहाँ हम लोग टिकट है, वहाँ टिकट इसका जो एंट्री कॉस्ट है, वहाँ पर टिकट हमने ऑलरेडी ले चुका है, जो हमने ग्रुप 1 से लिया था। वी विल जस्ट रिडीम द टिकट एंड गो इनसाइड। अभी हम जा रहे हैं वाउचर रिडीम करने यहाँ पे। यहाँ वाउचर रिडीम होगा तो एंट्री मिलेगा यहाँ से। This is your schedule of events, kind of what's happening where. Okay. Here is a map. Oh. There are other bigger maps of the same thing that are around the festival, but if you want, for your ease, you could take a picture of it, and then you have the picture on your phone. ये जो एंट्री गेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है। और सिक्योरिटी चेकिंग में एक्चुअली यहाँ पे वाटर बॉटल्स और बियर बॉटल अलाउड नहीं है। दे जस्ट पुट इट आउटसाइड। आप यहाँ अगर आ रहे हो तो आप ये सब कैरी नहीं करें, बिकॉज वो बाहरी रहने देंगे, आप अंदर लेके नहीं आ सकते हो। और ये जो है इसका पूरा शेड्यूल है, जो अभी यहाँ पे 3 बजे में आए हैं, तो यहाँ भी एक कॉन्सर्ट होने वाला है, फुल शेड्यूल। और जो बलून होने वाला 6:30 6:45 होने वाला है बलून। उस समय क्या होगा, 100 ऑफ बलून्स एक साथ हॉट एयर हवा में उड़ते हैं। आई थिंक 6:30 से इन्फ्लेशन बैलून को स्टार्ट होगा और 6:45 में ऊपर जाएगा। और यू कैन सी हियर कंप्लीट फेयर, फुल एक तरह का फेयर लगा हुआ है यहाँ पे। कुछ लॉट ऑफ शॉप्स जो लोकल यहाँ के हैं वो लोग अपने कुछ सामान बेच रहे हैं, लॉट ऑफ शॉप ओवर हियर। वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड। एक्चुअली हमारे फ्रेंड है जो वहाँ टिकट रिडीम कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल गो इनसाइड। जो रिस्ट बैंड है आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको बाहर जाना है, फिर अंदर आना है, कार के मान लीजिए पार्किंग एरिया में जाना है, आप चाहते हैं कि बार बार आपको कोड स्कैन नहीं करना पड़े, जो आप टिकट लिया है, तो यू कैन गेट दिस रिस्ट बैंड टू कम इनसाइड। यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस है, यू कैन सी हियर। बहुत सारा टॉयज भी है एग्जीबिशन में, लॉट ऑफ एग्जीबिशन ओवर हियर। आप देखिए, मैं आपको विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग। $2 ब्यूटीफुल बलून $2।
You like this game, Aro? This is not the game. तो यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क भी है जहाँ मल्टीपल राइड्स है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी सारे राइड हैं। सो इसका जो कॉस्ट है आपको वहाँ पे जो काउंटर दिख रहा है वो टिकट वहाँ पे टिकट मिलेगा। सो अगर आप सिंगल टिकट लेते हैं तो $1.50 का है और अगर आप 40 टिकट लेते हैं तब $40 का मिलेगा। और जितने ज़्यादा टिकट यू कैन सेव द मनी। दे 40 टिकट, 55 टिकट एंड सिंगल टिकट। 40 टिकट इज़ $40 एंड 55 टिकट इज़ $50। और उसमें एक्चुअली आपने 50 टिकट लिया तो यहाँ हर राइड का कुछ ऐसा, इस राइड का 4 टिकट देना पड़ता है आपको ये राइड करने की। जो आपको राइड देखे ये राउंड अप राइड्स का 4 टिकट है। मोस्ट ऑफ द राउंड यहाँ 4 टिकट ही है। जैसे वहाँ पे एक राइड है उसका 4 टिकट है। सो या इट्स अ प्रीटी गुड प्लेस बिकॉज ये पूरा फेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा अम्यूजमेंट पार्क बना दिए हैं, बच्चों के लिए अच्छा है ये। Little, it doesn't matter. Just make them. You have seen one of these before, haven't you? It's just like right in. So we just bought a fruit twister over here. Actually, Not bought, it's a free. मिल रहा था। फ्री की छोड़ना ही है। You like this? Like this? यही था। For number 1 and our double with her. They're going to win a swag bag as she walks away with $30 in scratch-offs as well. Now, we still have plenty of more stuff to give away right now, so if you want some more free swag for the New Jersey Lottery, a TV trivia question. Watch a lot of TV. So the way this is going to work is our DJ is going... Aro, how is the test? Tastes like the Subway one that I don't like. It's like salty? No, it tastes like the Subway one that I don't like. For chicken, it's going to be $12. Every event? So अभी हमने यहाँ पे जस्ट एक नूडल्स बाई किया है जिसे फर्स्ट पर $12। When the balloons go in, They're gonna be back there at like 6:30. 6:30, where it will happen? There? Back in the open field back there. Oh, okay. सो बलून फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो जो पहला बलून जा रहा है वो टेस्ट बलून है। एक्चुअली आज का वेदर थोड़ा अच्छा नहीं था इसलिए ये लोग पहले प्लान तो था कि इसको पोस्टपोन करने का, लेकिन अभी भी वेदर थोड़ा बिकॉज जो प्रेडिक्शन था वो अच्छा नहीं था, लेकिन शाम शाम वेदर थोड़ा अच्छा हुआ है। सो पहले यहाँ पर टेस्ट बलून भेजा जा रहा है चेक करने के लिए कि विंड का कंडीशन क्या है। देन आफ्टर जो रिमेनिंग बलून्स है उनको धीरे धीरे करके फ्लाई किया जाएगा स्काई में।
I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. Unicorn! 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 Hooray! Wow! Look how high you've sent him up! Well done, folks! Well done! We've got a few more balloons that are still going to take to the skies. I tell you what, the pilots can hear you. So as you see them take off, if it's your favorite or one of your favorites, give them a cheer and send them on their way here at the New Jersey Lottery Festival of Ballooning. For you, I'll go out of my own way. सो विद द लास्ट बलून सन का जो आपने बलून देखा विद दिस ये फेस्टिवल एंड होता है. सो एक्चुअली दिस आज लास्ट डे था इस फेस्टिवल का.
सो इट वॉज नाइस। आपने देखा कितने ज़्यादा बलून यहाँ उड़ाया गया, अराउंड 100 बलून यहाँ स्काई में उड़ाया गया है, हॉट एयर बलून्स, जो आप अभी उस साइड देख सकते हैं। बहुत सारा अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। सो इट वॉज वेरी गुड फेस्टिवल, और ये हर ईयर होता है, हर साल होता है। लास्ट ईयर नहीं हुआ तो कोविड की वजह से, बट दिस टाइम ये हर न्यू जर्सी में हर समय होता है, न्यू जर्सी हॉट एयर बलून फेस्टिवल। एंड अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ बलून आकाश में स्काई में उड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो यू कैन कम हियर टू सी दिस, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और टिकट कॉस्ट भी ज़्यादा महंगा नहीं है शायद, आई थिंक आई डू नॉट $10 या $10 इज़ द टिकट कॉस्ट। अर्शिका, अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा? तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत ही खूबसूरत था। आई एम फीलिंग लकी कि मैं न्यू जर्सी में हूँ, और इतना प्यारा सा यहाँ पे हमारा बलून्स होता, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं लास्ट ईयर से मैंने ये देखा क्यों नहीं। तो बट आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ पे बहुत सारे बलून्स थे, लाइक यूनिकॉर्न। सो माई फेवरेट इज़ स्माइल वन। So there are lots of other balloons, but my favorite is the smile one. So, okay, now bye. It's time to say bye. बाय। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए। एंड अभी पैरेलल में मेरा फ्लोरिडा ट्रिप का ये वीडियो चल रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू टू, आप अगर आप इंटरेस्टेड है फ्लोरिडा ट्रिप में, तो आप जाके वो भी वीडियो देखिए। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ मैं न्यू जर्सी से फ्लोरिडा बाय ड्राइव गया था, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।